Assalamu alaikum. In the name of Allah, most merciful, most graceful, I'm really delighted and so happy to see you all in this beautiful room. Especially my thanks goes to the organizers, Dr. Altaf Chima. I'm so glad to see you always. Dr. Rashid, Captain Rashid Sahab, and Dr. Shahid, and all the organizers, and very beautiful Miss Nasra. Thank you very much for inviting me. Please, we should do something for our nation. A very beautiful, and the beauty is skin deep. एक MBBS डॉक्टर सिंगापुर यूनिवर्सिटी से MBBS किया, 35 years में वो काम किया जो अमेरिका ने 200-250 साल में किया. मलेशिया and Mahathir Mohamad. Only MBBS, not postgraduate. He tried his clinic in his own vicinity, but not very good success. He joined politics, partially, but at the end, in 35 years, he added something, an iconic situation, और उसी के neighbor, just 2 years in union, Singapore vis-a-vis Malaysia, Mr. Lee Kuan Yew 35 years में आज तक वो कर दिया जो अमेरिका शायद 444 अचीव नहीं कर सका. At our level, 70% population is in villages. In Lahore, there are so many places of slum dog stories, slums. हमारा बड़ा मसला आबादी नहीं है, आबादी के एक मैस माइग्रेशन है जो गांव से देहात की तरफ. Because no services, no basic facilities are being offered at the government level. What me and you can do, Dr. Nasir Shah ने बहुत सारी अच्छी बातें की, go in union, NIHS को फॉलो करें. अभी भी आज की दुनिया में second point of thought is 45 years average lifespan है few countries में, plus 90 है 5 countries में. This is a huge big difference. Creator बनाने वाले ने BMW से trillion type बेहतर 75 trillion cell in a single human being इतने beautifully organized किए हैं. That's equally good in America, Singapore, Malaysia, and all the slum areas of Pakistan. पाकिस्तान का देहात का बच्चा भी इतना ही इंटेलिजेंट है जितना मैं, आप और कोई आइंस्टाइन हो सकता. प्लीज़ एटलीस्ट एट आवर लेवल अपने गांव पे जहाँ पे आपके एंसेस्टर्स हैं और आज जहाँ से बिलोंग करते हैं, डू समथिंग. वहाँ पे कोई ऐसा काम करें. 25 years ago, I lost my mother around when I was 2 years old. I had deep feelings. मेरे गांव में क्लोरोक्वीन, पेनाडोल अवेलेबल नहीं थी. My father was richest in that village, was नंबरदार. 25-26 years ago, I thought कि एक सोलर सिस्टम होना चाहिए, एक MBBS डॉक्टर होना चाहिए. आज वहाँ पे वो कुछ है, मैं आपको दिखाऊं तो you won't believe. वहाँ पे सोलर सिस्टम भी है, उस 10-12 कमरों में लाइट नहीं जाती. वहाँ पे 2 MBBS डॉक्टर्स मौजूद हैं. वहाँ पे 2 एम्बुलेंस, 2000 पीपल एवरी ईयर 25 गाँव से विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर, मेयो हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल तक आ सकते हैं. एक बंदे की छोटी सी एफर्ट से, आपके सोचने से ये चीज़ें हो जाती. जस्ट लिटिल बिट टाइम. आपका वर्कर क्लिनिक में काम करने वाला, घर में काम करने वाला, उस हैंड वॉश अगर उसने नहीं सीखे, नेल ट्रिमिंग वीकली नहीं होते छोटे बच्चों को वीक से पहले, और एडल्ट्स के वीकली नहीं है, हैंड वॉश नहीं है, हु शुड वियर मास्क एंड व्हाट टाइप ऑफ मास्क. तो प्लीज़ इस एजुकेशन का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आप पे नहीं है. अब 3-4 पेशेंट के बाद हैंड वॉश नहीं करते हैं, थोड़ा सा मूव अराउंड नहीं करते हैं. आज 24 hours में वी डोंट स्पेंड 1 hour in swimming or exercise or anything, then perhaps there is no basic impact on our lives. This is my basic
heartfelt feeling with you. Please do something, teach one, each one, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड करें, कुछ तो फुटप्रिंट इंसानों के रहने चाहिए. Dizziness, vertigo, it's a time for absolutely artificial intelligence. आपको गूगल से ज़्यादा एक छोटे से वर्ड्स बोलें कि प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन देनी है या नहीं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज सिलिकॉनाइज्ड साइंटिफिक इज इन फ्रंट ऑफ यू. You don't have to write few words for many lines. It's available on your chat. Now it's not time only for the telemedicine. I'm asking you, please use artificial intelligence. It's quickly available. It's so easy to use. Please do something. ये बहुत easy सा काम है. अब coordination चलेगी. डॉक्टर शाह कह रहे थे कि अब वो क्लिनिक का ज़माना गुजर जाएगा. We are our generation gap, digital gap. There are so many gaps between me and the person who is coming after me. He's more smart. Dr. Rashid Ali. ये लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वेल ओरिएंटेड इन टाइम एंड स्पेस जो आपने सीखा था, उसकी जगह पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्लीज़ प्लेस इट प्रॉपरली. आप जितना मर्जी नो के, दिस विल टेक आवर प्लेस. वी शुड बी स्मार्ट इनफ इन एडिंग आवर लाइफ्स बिकॉज इट adds beauty, it's ease, it's so easy for us. So, no word to remember vertigo, dizziness, giddiness, heart sunkenness. WHO says कि जिससे भी swing होती है, imbalance होती है, सभी इसमें आता है. So it's not your wording. Vertigo is just symptom. वो किस तरह का है, forget about it. जो पेशेंट कह रहा है, प्लीज लिसन केयरफुली. आज की दौर में भी हैमिल्टन, हैरिसन जो कह रहा है, लिसन द पेशेंट कॉशियसली. ही स्पीक्स पश्तो, सराइकी, पंजाबी. ही वांट्स टू से समथिंग. एंड द जीपी इज हकीम लुकमान. आई एम माई सेल्फ जीपी. We have to listen the patient very cautiously what he says. Maybe she is totally psychogenic. Maybe she is some problem somewhere underneath. So please listen for a few minutes, then don't speak. No guiding questions. First few minutes tell you everything. A patient enters in our room with a beautiful walk and tells that my whole life is ruined for the last few days. There's vomiting. There's all of a sudden I wake up, there was so much tornado-like, cyclone-like situation, and there was dizziness. There's nausea, vomiting. It's nothing. It's a simply benign paroxysmal positional vertigo. और पेशेंट को 10 लोग पकड़ के लाए हैं तो ये न्यूराइटिस या लेब्रेंथाइटिस है. ये पेशेंट को ड्रिप लगानी पड़ेगी. ये दूसरे वाले पेशेंट को, ये पेशेंट ने 2 से 3 दिन में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने से बिल्कुल ठीक हो जाना. It's nothing to do with that. The diagnosis is simple. We should not go far away. Those dizziness that's far little, so we have to remember now telemedicine के जहाँ पे आप बहुत सारा फ़ोन पे लोगों को हेल्प करते हैं at the cost of your practice. So balance is a learning reflex. आज कैट वॉक और वॉक में बहुत फ़र्क, बोलने और सही बोलने में बहुत फ़र्क. लोग आपकी ब्यूटी आपको नहीं देखते. आपके एक्शन स्पीक सो साउंड वे इन ए बोल्ड लेटर कि आप जो कर रहे हैं वो पेशेंट को साफ विजिबल. यूर वेरी गुड, वन स्माइल कैन चेंज द होल सिचुएशन. पेशेंट ने लंबी चौड़ी बात की, आपने जस्ट एक स्माइल की ग्रैंड मदर की तरह. दिस इज सफिशिएंट इनफ टू रिप्लाई रादर देन रिप्लाइंग एवरीथिंग एट द एंड. We want to just end up with the confrontation, which mostly young doctors are doing. हमें हर मरीज फसी लगता है. If I am patient, I'm the most fussy patient because my demands, expectations are too much. Balance is a learning reflex. Chinese, Japanese जो आप Olympics में, Summer Olympics में, Winter Olympics में देखते हैं, how finally they are tuned up. हम में से भी जो आज के दिन स्विमिंग नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, देयर इज नो ह्यूज बैंग ऑफ एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन इन योर ब्लड. इफ दीज 3 chemicals are not flooded in our blood, we are not smiling. We are not smiling from our heart. If we are not smiling of our heart, we can't do much for our nation. जो अपने घर वालों का सगा नहीं हो, बाहर वालों के लिए कैसे हो सकता है?
अगर आप एक्सरसाइज करने के आदी ही नहीं हैं, आप 10 पेशेंट देखने से पहले 3-4 पेशेंट के बाद उठें, उठ के पानी शानी पिएं, थोड़ा सा स्माइल करें, लुकिंग ग्लास 2-3 आपके कमरे में लगे होने चाहिए। आवर प्रोफेसर एंड वन वेरी वेरी फाइन प्रिंसिपल एट यंग एडवर्ड, वो हमेशा बार बार कहते थे कि बार बार स्माइल करने की कोशिश करो ताकि पब्लिक में आदत पड़े आपको। सो इट्स अ लर्निंग रिफ्लेक्स। हम में जितने लोग बैठे हैं हर एक का बैलेंस डिफरेंट है। जो थोड़े एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज डजंट मीन ओनली वॉक, आर्म्स, नेक, स्पाइन, प्लीज डू समथिंग। यूट्यूब पे पढ़ा है, डेली डू समथिंग, इट इज नेसेसरी। विटामिन डी शुड बी स्काई हाई। इट्स नॉट फॉर योर स्केलेटन, इट्स फॉर योर बैलेंस आल्सो, इट्स फॉर योर इम्यून सिस्टम आल्सो। So balance is a totally learning reflex. There are 2 types of basic control in our body. The best organ which has ever attained, that is vestibular system, semicircles, circle-like semicircular canals in milliseconds tells our brain you are balanced, you are off balanced. And our VN, good VN adds a lot. 3 साल के बच्चे तक VN चेक होनी मस्ट है। जिसने नहीं चेक कराई बस उसी की ठीक है, समझ लो। बच्चे को स्कूल भेजने से पहले प्लीज़ डोंट सेंड, जब तक उसकी हियरिंग के बारे में विस्पर फ्रॉम बोथ ईयर्स एज 6 feet शुड बी एब्सोल्युटली ऑडिबल। सेम इज़ ट्रू फॉर द VN। 30% बच्चों की VN कम है, उनका बैलेंस भी ख़राब हो जाएगा। So vestibular system, when you are sitting, your saccule and utricle is working right now. When you will start running after few minutes, walking, your semicircle starts working. If you are running fast, doing some swimming, which hopefully everybody will do after few minutes, or today, that's the best choice really, the best exercise. So this place in the brain, junction of medulla and the pons, there are 4 nuclei on each side that at milliseconds level controls our balance so beautifully that we feel so strong. Once you are having a big spell of dizziness or vertigo in your life, or you fall in public, the whole confidence is shattered. Please don't allow that moment to come in your lives. वो बाइडन की तरह नहीं होगा कि हर 5 मिनट बाद स्लिप कर रहा है। प्लीज़ आस्क योर सेल्फ, डेली अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, और हम लोगों का कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट, प्लीज़ इसको डेली, हमारी पाकिस्तान में प्लेट बहुत बड़ी है, ये कम से कम 1/3 होनी चाहिए। हर घर में प्लेट का साइज़ ही कम कर दें, आई थिंक सो देयर विल बी अ बिग चेंज। ऑयल एंड कार्बोहाइड्रेट 3rd वर्ल्ड में ऐसे खाया जाता है जैसे आज जंग लग जानी है और आखिरी दिन है ज़िंदगी। प्लीज़। सो पेरिफेरल वर्टिगो एंड सेंट्रल वर्टिगो। पेरिफेरल वर्टिगो इज 85 to 90%. That is so severe. That is usually associated with nausea, vomiting. Sometimes with tinnitus and hard of hearing. That's almost ear is responsible. If the small swing, patient is having some tremor also, there's some memory loss, this is so 100% CNS issue, as you know very well, cerebellar symptoms, many of the dementia-like symptoms. इसी दुनिया में जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 क्रॉस करती है तो डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, इफ़ यू गो फॉर NIH इन कैनेडियन सिस्टम, द बिग प्रॉब्लम इज़ डिमेंशिया। वहाँ पे वेल ऑफ लोगों ने 2-2 डॉक्टर्स रखे हुए हैं हु टेक्स केयर ऑफ राउंड द क्लॉक। So peripheral vertigo is almost 90%. It's almost 100% controllable. Just your smile, good words, your treatment is 2-3 basic types. Benign paroxysmal positional vertigo. That is almost easily controllable. We go through, I think so we may not get late. Benign paroxysm is 80% vertigo is this much. A simple physiotherapy, rotation in
360-degree Epley's maneuver. If you read it out, you can do it. 80 to 90% patients will be absolutely fine after 45 minutes. It takes 35 to 45 minutes to conquer this whole. And the second one is vestibular neuritis, also called vestibular neuronitis. Labyrinthitis, neuronitis, this is very, very, very severe. The most severe form of vertigo is a patient is coming to your clinic, yeah, your family friend has called you कि उठ नहीं रहे, गिर गए हैं, vomiting आ रही है, eye is just rolling like doll's eye. ये तो बहुत severe. Patient needs admission. Patient needs fluid electrolytes. ये vomiting खुद ठीक नहीं होना है. Patient immediately needs some service of a doctor. It will take 2 to 3 days. Patient will be certainly stable. You can only add few of the antiemetics. Stemtel is the best. Simple, even sedatives are very effective. Dramamine is very effective. Stemtel is very effective. Meniere disease is very uncommon. It's a long term. It's associated with tinnitus, hearing loss, but it's a different story. The rest are very, very less common, especially cervical spine spondylitis-like situations, cerebellar, diabetes mellitus, and so many others. And please never forget 5% psychogenic. Female, usually less attended, usually associated with other social issues, and motion sickness associated with movement. आपने मरी की सफ़र करना है, अंडुलेशन में जाना है, बाई एयर करना है, प्लीज़ एम्प्टी स्टमक, जस्ट फ्यू सिप्स आर गुड इनफ. आपने पीसी में फ्री का वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है, हैवी किया है, डोंट मूव आउटसाइड, स्पेशली ऑन योर कार. ज़रूर मूव करना है तो फ्रंट सीट पे बैठें, खुद ड्राइव करें, सो एडजस्टमेंट विद लिटिल मोर. आपने फ्री का अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया है और पिछली सीट पे बैठेंगे, 80 to 90% चांस यू विल स्पॉइल द होल सिचुएशन. आप सभी लोगों को डिस्टर्ब करेंगे. दिस सॉर्ट ऑफ, सो एम्प्टी स्टमक होना चाहिए. एनीथिंग लाइक प्रोक्लोरपिराजीन, स्टेमटेल, डेमामीन विल बी वेरी इफेक्टिव. So there's so many exercises, tests that can help us to exactly clinch the diagnosis. Our medical students are doing cerebellar tests. This repetitive tests. Few of the basic tests. Very rarely you need CT scan and MRI in these cases. In acute phases, please never ask for tests. 80 to 90% with simple medicine like Circ, like Dramamine, like Stemetil, 95% will be fine just in a few days. But never forget HbA1c. हम सब ने अपना HbA1c करवाना है, विटामिन D करवाना है. ये सिर्फ उसी का ठीक है who has not been checked. It's abnormal, and same is true for the TSH. Thyroid hormone is also with age is getting upside down. So treatment is very simple, as I was telling you, with absolute rest is required. You are not allowed to do driving on the edge of a surface or in the public. Don't cross the road. You may end up with a big accident. So you can do little exercises. These are also available on YouTube. Please use artificial intelligence. Epley's maneuver is very easy to learn. It is very active and effective in 90% individuals. Memory pillow and incline mattress. इस हाल में बैठे जितने भी 35 years से ज़्यादा हैं, please, my experience is incline mattress. 30 degree आपका बेड साइड आप नहीं करना तो इंक्लाइन मैट्रेस ले लें. इट्स वेरी गुड फॉर योर GI, गुड फॉर योर हार्ट, स्पेशली फॉर योर स्पाइन, स्पेशली फॉर दिस कंट्रोल ऑफ वर्टिगो. Thank you very much, my friends sitting on the dais, for tolerating me for 1 minute more. This is a slide which I want to show you.
Labyrinthine sedatives, circ for few weeks, not for few days. 8 milligram, 16 milligram, 20 milligram, you have to select according to weight. जिनको blood pressure है, जिनको heart diseases हैं, please give it in the minimum dosage. It leads to undulation and uncontrol of blood pressure. It's not good drug otherwise. It leads to tachycardia. So it can end up with heart attack. So it's a little not good for your heart. This is very, very good drug. Prochlorperazine, Stemetil or Dramamine, these are absolutely active and effective, not for vertigo, for motion sickness also. Have a very good time. Again, thank you Dr. Shahid, Dr. Rashid, especially my friend Dr. Altaf Chima and everybody over here. बात करना बहुत आसान है और इतनी देर तक सुनना, really I appreciate your findings. Thank you.